Hello and Assalamualaikum to everyone. GCET Educational Hub में सभी दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लासरूम असेसमेंट के मतलब है। क्लासरूम असेसमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लासरूम असेसमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अहमियत की आमल हैं। ड्यूरिंग द क्लासरूम असेसमेंट एक अहम टॉपिक है और क्लासरूम असेसमेंट के बारे में इल्म और नॉलेज होना और इसका सही इस्तेमाल करना एक टीचर की बेहतरीन क्वालिटीज़ में आता है। अगर मैं क्लासरूम असेसमेंट को बयान करता चलूँ तो कुछ इस तरह है। क्लासरूम असेसमेंट इज़ एन ongoing process through which teacher and students interact to promote great learning. The assessment process emphasizes data collection of students' performance to diagnose learning problems, monitor progress, and give feedback for improvement. Involves using multiple methods in order to obtain student information through a variety of assessment strategies. ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके अंदर टीचर और तालिब इल्म इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और लर्निंग प्रमोट होती है। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट। द फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्निंग सेंटर्ड असेसमेंट लर्निंग सेंटर होनी चाहिए, टीचर डायरेक्ट और टीचर डायरेक्ट होना चाहिए, मल्टीपल बेनिफिशियल और इसके मल्टीपल बेनिफिट्स होने चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स को बेहतर से बेहतर नॉलेज फ्राहम किया जा सके। लर्नर सेंटर इज़ द फोकस इज़ ऑन ऑब्जर्विंग एंड इम्प्रूविंग लर्निंग। टीचर डायरेक्ट द इंडिविजुअल टीचर डिसाइड व्हाट टू assess, how to assess and how to respond to the information assess, how to assess. Multiple mutually beneficial student reinforce course content and strengthen their. Next is formative. Its purpose is to improve the quality of student learning, not to provide evidence for evaluating or gathering students. It provides information on what, how much and how well students are learning. Context specific. The assessment technique is chosen to fit the subject matter and the need of the particular class. Ongoing the certain and maintenance of a classroom feedback loop. These are some basic characteristics of good classroom assessment. Now we are moving on next as formative assessment. As used to monitor students' progress during instruction purpose, to make judgment about individual student achievement and assign grades. Example: quiz test, exams, term paper, lab reports, homework. These are some formative assessment that we can use inside the class to assess the student progress. So we can take quiz, test, exam, term papers, lab reports, and homework to assign different kind of works to the student to assess the and evaluate the student inside the class and at the end of the class or at the end of the semester. The next is summative assessment. Comprehensive, typically given at the end of program and provide for accountability purpose to inform teaching and improve learning, used as feedback devices. Example: pose questions, listen to student questions and comments, monitor body language and physical expressions. Classroom assessment techniques. For example, pose question, listen to student, you ask question and student give answer orally, and comments, monitor body language. What is the body language of one student when he is responding?
etc. A set of guiding principles. Here are some principles that are necessary for assessment. Assessment requires clear thinking and effective communication. Those who develop and use high quality assessment must share and a high focus. Classroom assessment is the key. Top teacher direct the assessment that determine what student learn and how those students feel about the learning. Students are assessment user. Students are the most important user of assessment result. We can say that assessment is important when we want to judge how much student learn and what are their feeling about the topic. You must have a clear and appropriate target and essential. You must have high quality assessment is a must. High quality assessment is essential in all assessment content. 5 specific quality standards: clear targets, focused purpose, proper method, sound sampling, accurate assessment, free of base and direction. You can assess the quality learning by using specific quality standard. You must have a clear targets, focus on basic purpose of learning, proper method of assessment, sound sampling, accurate assessment, fee. Understand the personal implications. Assessment is an essential activity. Assessment are teacher and learning. These are some standards and principles through which you can make a good assessment to assess the student inside the class or at the end of the class or at the end of the session or semester. An assessment will give you a right way that how much student learn and how much they understand about the topic. इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हुए आप बच्चों की असेसमेंट को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो असेसमेंट के अंदर अहमियत के अमल हैं। टाइप ऑफ अचीवमेंट टारगेट्स। कौन कौन से टारगेट्स हैं जो हम अचीव कर सकते हैं असेसमेंट के ज़रिए। नॉलेज टारगेट, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द नॉलेज टारगेट, सेकंड वन इज़ द रीजनिंग टारगेट, थर्ड वन इज़ द स्किल टारगेट। कितना बच्चों ने लर्न किया है और कौन कौन सी स्किल बच्चों के अंदर प्रमोट हुई हैं। ये टारगेट्स तभी अचीव हो सकते हैं जब हम आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और उसके साथ साथ हम अपने ILOs पर गौर व फिक्र कर रहे होते हैं। ILOs के साथ अपने टॉपिक को मिलाकर पढ़ाना और उसी में से असेसमेंट और एवेल्युएट करके हम बच्चों की प्रोग्रेस को जज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द प्रोडक्ट टारगेट्स। अनदर वे फॉर स्टूडेंट टू सक्सीड academically is through certain quality products. Dispositional targets. The final category of valued target is quite broad and complex and include those characteristics that go behind an academic into the realms of the affective and personal feeling states such as attitude toward something, sense of academic self-confidence or interest in something. The motivationally pedals a person to do or not to do something. Now we will talk about the assessment option. The first of all, selecting response assessment. This category include all the objectivities, scored paper and pencil test format. Essay assessment. In this case, the respondent is provided with an exercise that calls for the preparation of an external written answer. Performance assessment. In this case, the respondent actually cram out a specific activity under the watchful eye of the evaluator, who observe performance and make judgment as the quality of achievement demonstrated. Now, the next one is
that we can say as the assessment option as personal communication assessment. One of the most common way teacher gather information about day-to-day student achievement in the classroom is to talk to them. All these kind of assessments are very essential for the student judgment and student learning, as a teacher can apply these all kind of skill inside the class to promote learning and promote the understanding of the students inside the classroom. A teacher play a vital role when he use different kind of strategies and skills to promote knowledge and promote the learning quality. Now, the next topic is matching method with targets. The most important thing, what is your target and what you want from them? It means the challenge for the professional is to address all seven guide principle of quality classroom assessment by developing a quality assessment plan which match the appropriate assessment method with the desired achievement targets. आपने कौन से टारगेट रखे हुए थे और उसके अंदर असेसमेंट के अंदर आपने कौन से टारगेट्स को हिट करना है। जो भी आपके ILOs थे, क्या असेसमेंट के अंदर वो उसको मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट एज टेस्ट। टेस्ट इज अ deliberate attempt to acquire information about themselves or others, usually used to describe a systematic procedure for obtaining a sample of student behavior. टेस्ट करने से हम किसी भी बच्चे के बिहेवियर को बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं और उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। आया क्या इसने लर्न किया है या नहीं किया है, क्लास के अंदर इसकी कितनी स्ट्रेंथ थी और उस स्ट्रेंथ के अंदर कितने बच्चों ने बेहतर तरीके से लर्न किया है और कितने बच्चों ने बेहतर तरीके से लर्न नहीं कर सके और उसकी क्या वजूहत हैं। टेस्ट हमें इस चीज़ के बारे में बताता है। 3 functions of assessment. They provide information that useful for improving of instruction, is making administrative decision for guidance purpose. यहाँ पे 3 चीज़ों का या 3 फंक्शंस का हमें ख्याल रखना होता है कि हम जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें क्या वो यूज़फुल है या नहीं है। इज़ मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, और एडमिनिस्ट्रेशन जो डिसीजन बनाता है नेक्स्ट, तो उसमें भी ये यूज़फुल रहते हैं। फॉर गाइडेंस पर्पस, और ये गाइडेंस भी मुहैया करते हैं ताकि आने वाले वक्त में इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। एक अच्छी और बेहतरीन असेसमेंट के अंदर इन तमाम चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। 3 basic concepts about the assessment. A test focused on a particular domain. Your test must be related to a focused domain. A test a sample of behavior, products, answer or performance from the domain. A test is made up of items. एक टेस्ट जो आप बना रहे हैं उसमें सिलेक्टेड आइटम्स होने चाहिए और उसकी एक ख़ास नौइयत होनी चाहिए जो आपके नॉलेज एरिया को टारगेट कर रहा हो। तो जो 3 बेसिक कंसेप्ट हैं इसमें सबसे पहले पर्टिकुलर डोमेन होनी चाहिए और सिंपल बिहेवियर टाइप होना चाहिए, और उसके बाद अ टेस्ट इज मेड अप ऑफ आइटम, और ख़ास आइटम्स का सिलेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट 2 main type of item. Selection types require the student to select the correct or the best answer from the given option. Supply type and fill in blank or essay type. मेन असेसमेंट के अंदर हम इस तरह के आइटम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन टाइप आइटम्स, जो कि हम MCQs की शक्ल में या कोई भी एक सवाल है उसकी जो मुमकिन जवाबात हैं उसकी शक्ल में हम इसको डेवलप कर सकते हैं। या सप्लाई टाइप्स में मिसाल के तौर पे हमारे पास गिवन है और हमने उनको फिल इन ब्लैंक्स करना है, तो इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और
लॉन्ग टर्म के लिए हम ऐसे टाइप टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन टेस्ट। What is a non-test? Oral and written reports. Students research a topic and then present either orally or in written form. Teacher observation. The next one is the teacher observation. The teacher observes student while the work to make certain the student understand the assignment and or the task. Journal. Student write daily and assign a personal topic. Portfolio of the student work. You must create a portfolio related to the all topics. This portfolio is very valuable for the students because all knowledge are submitted in the portfolio for the better learning. Slates or hand signals. Students use slates or hand signal as a means of signals answer to the teacher. Games. Teachers utilize fun activities to have students participate and review concept. Projects. The student research a topic and present in a creativity way. Database. The student take opposing position on a topic and define their position. Checklist. The teacher will make a list of objectives that students need to master and then check off the skill as the student master it. Mean you must have a clear concept about the checklist. The teacher can create a good checklist. Cartooning. Student will use drawing to dispatch situation and ideas. Models. You can also use models. The student produce a mature replica of given topic. Note. Student write a summary of the lesson. Daily assignments. The student complete work assigned on a daily basis to be complete at school or home. Panel. A group of students verbally present information. Learning center. Students use teacher provide activities for hands-on learning. These all kind of things that can be used inside the class to teach the students and find out the good results. Demonstration. Students present a visual announcement of a particular skill or activities. Problem solving. Students follow a step-by-step solution of a problem. Discussion. Students in a group verbally interact on a given topic. Organization note. Sheets and study guides. Students collect information to help pass a test. These all things are very useful to conduct a good assessment inside the classroom. All these activities can improve the knowledge. Thank you for watching. If you didn't like and subscribe our channel, please like and subscribe for more videos. Thank you. Allah Hafiz.